Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, this is your teacher Dr. Noor Muhammad and I welcome you in A2 level biology lecture series. A-level biology lecture series. As you all know, alhamdulillah, we have completed our chapter number 1 and 4 under the heading of cell already in the previous lecture. And as I've told you during the chapter so many times that this chapter, the topic of cell is actually a very detailed topic, is actually a topic which is asked frequently in your examination, and students always get confused in those minor things which are normally discussed in every class, which were discussed in every class. You have answered those things in class, but when the examiner asks you the same thing in a different pattern, different manner, you get confused. As you all know that we have learned a lot of details, a lot of concepts in the chapter of cell, not concepts exactly, but there were a lot of information. There was a lot of information, loads of information we have gone through in the previous chapter. जो topic हमारा cell का था, especially the cell membrane वाला part where we discussed lot of aspects about the proteins, about the lipid bilayer, about the functions of the cell membrane across the cell. All those things were discussed, and I think that you all have revised all those things जो कि हमने की थी. फिर when we started discussing the cytoplasmic organelle, we discussed a lot of things. We discussed about nucleus, cell wall, we discussed about cytoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, and lots of things. ठीक है, lysosomes. We discussed the composition, the structure, the functions, everything is discussed already. So I would highly suggest, if you are watching this lecture and you have not revised all those things, it's really important for you to revise all those things, as before moving on to the next chapter, it's my responsibility, like always, that we together look at exam based questions जो कि इन topic से आते हैं, so that before getting into my test or before getting into the exam, after just completing the chapter, आप fresh जो है exam based questions की practice कर सको. इससे आपको दो चीज़ें होंगी. एक तो आपको exposure मिल जाएगा exam based questions का. You will come to know that exam based questions कैसे आते हैं, and दूसरी चीज़ जो आपको फ़ायदा होगी, because we just have finished the chapter, so all the concepts must be very fresh in your mind, and that's the correct time. Because what happens in most of the cases, that स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप चैप्टर नंबर 1 अभी आपने ख़त्म किया है, तो दे डोंट प्रैक्टिस इट एट द सेम टाइम, ठीक है ना. बल्कि जब हम चैप्टर 6 कर रहे होंगे, तो एट दैट टाइम दे डू चैप्टर नंबर 1 एंड दे स्टार्ट प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 1. तो ऑब्वियसली जो ऑल द फ्रेश कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो जा चुके होते हैं, एंड बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें जो आपने पढ़ी होती हैं ऑलरेडी, लेकिन वो आपको नहीं आ रही होती हैं, वो उसमें आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं. तो दैट्स द बेस्ट टाइम. हमने A2 के साथ भी यही प्रैक्टिस रखी हुई है, आपके साथ भी यही प्रैक्टिस रखेंगे कि चैप्टर के एंड पर आई विल हैव 1 or 2 sessions or 3 sessions where we will solve different questions. अच्छा, how we are going to approach the worksheet, I am going to show you in a while. That I'll be reading the question. I'll be talking about direct indirect references to the question. अगर अच्छा A2 में तो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको टाइम भी देता हूँ लिखने के लिए. जस्ट राइट योर आंसर एंड देन फिर हम मार्क्स स्कीम के आंसर से कंपेयर करते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर MCQs देख रहे होंगे तो MCQs के अंदर वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद आई ऑब्वियसली वी आर नॉट फिजिकली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बट आई एक्सपेक्ट कि जब मैं आपको ये लेक्चर आप मेरा सुन रहे होंगे, तो यू विल पार्टिसिपेट एज यू आर टेकिंग इट लाइव, एज यू आर टेकिंग इट फिजिकली, ठीक है ना. तो यू हैव टू जेनरसली पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन सो यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस practice session, because it is a very hectic job for a teacher, because teacher loves to just teach the topic and go on to the next topic. ठीक है, this kind of work जो आज हम कर रहे हैं, this is kind of a very burdenized thing on a teacher, ठीक है, because teacher knows the answer, teacher know how to teacher or every teacher has already delivered you the concepts जो कि अब आपको यूज़ करने हैं और उनको यूज़ करके आपने आंसर्स निकालने हैं. बट यहाँ पर जो हम 1-on-1 सेशन कर रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप देखोगे मेरे साथ इन माय प्रेजेंस दैट जो चीज़ें आपने पढ़ी थी, और चाहे वो कितनी डिटेल में जाके पढ़ी थी, वो चीज़ें एग्जाम में क्या उसी तरह से आती हैं. दे आर आस्क्ड इन द सेम मैनर और दे आर आस्क्ड इन टोटली डिफरेंट मैनर. और इफ दे आर आस्क्ड इन डिफरेंट मैनर, सो हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दैट. So all these questions will be answered in today's session. So let's quickly move to now my screen, which you can see on my left hand side now. ठीक है, let's quickly move to the screen.
So guys, here you can see my screen, obviously. The first question, this is the topical worksheet, which is combining the question of cell structure and the membrane transport, which is chapter number 4 and chapter number 1 again. ठीक है, and we have discussed both the topics. तो मैंने दोनों को combine worksheet आपके सामने रखी है, and we will be looking at questions randomly में भी questions को देखेंगे हम लोग, और उसके बाद जो P1 के questions भी देखेंगे, P2 के questions भी देखेंगे. But you have to promise me, I am expecting you guys to participate as you are taking this session live. You have to respond. ठीक है, while we are discussing any particular question, you have to keep repeating those things जो कि आपको पढ़ाई गई हैं इस चैप्टर में. Although I will repeat the concept, I will recall you the concepts जो मैंने बताए थे उस question से related, so that आपकी picking power बढ़े. So let's not waste the time now and just move to the question number 1. As you can see, the question number 1 is quite simple looking question, and as I've told you many times that this is the paper 1 which is giving you a bonus marks. ठीक है ना, if you are score in paper 1, तो जो गलतियां आप paper 2 में अपनी lack of mature explanations की वजह से करते हैं वो compensate हो जाती है paper 1 के अंदर. तो the first question here is, an actively growing cell is supplied with radioactive amino acid. A cell is growing actively and it is supplied with amino acids because they are needed for making proteins. But the amino acids here which are supplied are radioactive, यानी कि वो radioactive radiations emit कर रहे हैं. अब देखें, radioactivity के बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है चैप्टर में, but यहाँ पर radioactivity is not the concern. Concern is that amino acids are given to the growing cell. So अब सवाल क्या है, which cell component would first show an increase in radioactivity? कौन सा जो component होगा इनमें से वो पहले radioactivity के signs show करेगा? So you have supplied radioactive amino acids, and amino acids are going to be used in the protein synthesis. Can you remind yourself, or can you recall where protein synthesis takes place in cells? Let's look at the option. Golgi body. Do Golgi body involve in protein synthesis? If you remember, the Golgi body is involved in the modification and packaging of proteins made by endoplasmic reticulum, or particularly the rough endoplasmic reticulum. It means Golgi bodies are not directly involved in the protein synthesis. और अगर Golgi involved होता भी है तो after endoplasmic reticulum होता है. इसका मतलब ये हो गया कि it will not be the first organelle जो कि show करेगा radioactivity के sign. Second is mitochondrion. Mitochondrion में कोई protein synthesis नहीं होती. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज अगेन गिविंग द ऑर्डर. ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास हम न्यूक्लियोटाइड सप्लाई कर रहे होते जो कि डीएनए और आरएनए की बेसिस हैं तो शायद न्यूक्लियस में पहले डिस्प्ले होती, लेकिन यहाँ पर हम अमाइनो एसिड सप्लाई कर रहे हैं. एंड हियर व्हाट यू कैन सी दैट ऑप्शन डी इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज आरईआर इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइनो एसिड असेंबलिंग. तो इट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनेल व्हिच इज गोइंग टू शो द sign of radioactivity. ठीक है, that should be the right answer, is it? Yes, that's the right answer. ठीक है जी, let's move to the next question. अच्छा, I'll read the question and I'll then give you 1 minute to think about it, and then we will talk about the answer. ठीक है, so the next question is, which combination is found in prokaryotic cell? ठीक है, first you look at the question, think, and then I'll talk about the question and the answer.
I think you are thinking in a right way. You have studied the prokaryotic cell, you know the prokaryotic cell like bacterial cell. So let's go to the discussion now. Do prokaryotic cells have any membrane bounded organelles? So the answer is no. No membrane bounded organelle, no endoplasmic reticulum, no mitochondria, no Golgi body. तो all these structures will not be present. तो यहाँ पर endoplasmic reticulum का पहला portion है, तो इसमें क्रॉस आना चाहिए. तो आंसर would be from C and D. ठीक है. Now DNA is present. Yes, naked DNA is present. ठीक है, जबकि डी के अंदर डीएनए इज एब्सेंट. तो इट मीन्स कि ये यहीं पर ही गलत हो गया, आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप आगे जाना भी चाहते हैं जस्ट टू कंफर्म कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो आप देखो आगे है आरएनए. आरएनए इज आल्सो देयर एंड न्यूक्लियस इज आल्सो एब्सेंट. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पर न्यूक्लियस पे भी क्रॉस लगा हुआ है. तो आंसर शुड बी सी. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Oh, that's an interesting question. ठीक है, this question is about the एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला जो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाइपरटोनिसिटी और हाइपोटोनिसिटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था. तो जस्ट क्विकली रीड द क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू द टाइम फॉर 1.5 minutes. जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट ट्राई टू रीच द आंसर एंड देन आई विल टॉक टू यू अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. Okay guys, you must have read the question and up till now you must have reached to the answer. Now let me discuss the concept so that you can not only reach to the answer, you should know the right concept of getting to the answer. The question was saying that strips of plant tissue were emerged in a range of sucrose solution of different concentration. Different concentration की sucrose solution में डाला आपने, ठीक है, as you know hypertonic, hypotonic solutions. Their length were measured before immersion and after 30 minutes in different solution. Length को पहले भी measure किया गया before immersion और after measure भी किया गया है. अब graph shows the ratio of initial to final length. तो as you can see that sucrose concentration जैसे जैसे आप increase कर रहे हो तो जो रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है, विच इज ओनली पॉसिबल जब फाइनल लेंथ कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा और न्यूमिनेटर ज्यादा होगा. ठीक है, तो इट मींस लेंथ इज डिक्रीजिंग. विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हैज द सेम वाटर पोटेंशियल एज द सेल सैप बिफोर इमर्शन. इमर्शन से क्या कहते हैं, किस सुक्रोज सोल्यूशन की जो किस कॉन्सेंट्रेशन पे सुक्रोज सोल्यूशन की जो वाटर पोटेंशियल है वो सेल के पोटेंशियल के बराबर होगा. तो कहाँ बराबर होगा, जहाँ पर इनिशियल और फाइनल लेंथ में कोई चेंज नहीं आया होगा. क्यों? क्योंकि वी नो जब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है यानी सेल के अंदर और बाहर सेम एनवायरनमेंट होता है तो देयर इज नो नेट मूवमेंट, और जब देयर इज नो नेट मूवमेंट तो इनिशियल और फाइनल लेंथ सेम रहेगी और दोनों सेम होंगी, दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट्स द रेशियो. तो आंसर शुड बी 1. तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आना चाहिए,
1 या 1 से क्लोज आना चाहिए। तो 1 से क्लोज आंसर क्या है? 0.8 है, सॉरी 0.45 है, एक मिनट लेट मी सी। ओके यस ऑब्वियसली सॉरी इट्स माय मिस्टेक, द आंसर शुड बी 1। ठीक है, अब 1 से आप यहाँ आई कैन नॉट राइट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, तो 1 से आप लाइन को ग्राफ पे टच करोगे, 1 से आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे जो कि ग्राफ को टच करेगी, एंड देन उससे आप फिर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, तो दैट विल टच इन बिटवीन 0.4 एंड 0.5, दैट विल बी 0.45। लेट मी रिपीट दिस अगेन। क्या करोगे? इनिशियल टू फाइनल लेंथ जब रेशो 1 आ जाएगा उसका इसका मतलब है देयर इज नो नेट मूवमेंट, तो 1 वाले से हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन आप ग्राफ पे टच करके वहां से फिर वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलरली टच करोगे एक्स एक्सिस पर, एंड दैट वुड बी द कंसंट्रेशन, दैट इज 0.45। ठीक है, अच्छा, this is the question related to microscopy. As we have not done the microscopy, we have left that portion for the practical understanding, to just leave this question for now. ठीक है, okay, that's another interesting question जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है. Just read the questions together and then I'll give you the time to write an answer and then we'll move forward. So the diagram is taken from an electron micrograph of a cell which secretes digestive enzymes. ठीक है, एक ऐसे डायग्राम लिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से उस सेल का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर रहा है. व्हाट आर दीज एंजाइम्स मेड, सॉरी वेयर आर दीज एंजाइम्स मेड, एंजाइम्स कहाँ बनते हैं. ठीक है, तो जस्ट take your time to reach to the correct answer and then we'll talk about the correct answer. Okay, you must have gone to the answer up till now. So let me tell you the answer. Let me tell you the concept जो कि यहाँ यूज़ होना था. I don't know आपने वही concept यूज़ किया है नहीं. मेरा टाइम देकर आपको फिर आंसर के ऊपर डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर if you have reached the right answer but you don't have the right logic, so you have to rectify your logic. क्योंकि अगर तुक्के में आपने एक आंसर सही कर लिया तो मे बी नेक्स्ट टाइम आपका वो तुक्का ना चले. So यहाँ पर क्या पूछा था उसने कि भाई ये एंजाइम्स कहाँ बनते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. तो अब स्ट्रक्चर जो लेबल हुए हैं लेट्स टॉक अबाउट देम. ए स्ट्रक्चर जो है एज यू कैन सी दैट इट इज अ सिक्रीटरी वेसिकल रिलीज फ्रॉम गोल्जी. ऑब्वियसली इट इज कैरीड फ्रॉम गोल्जी अपरेटस. ठीक है, बट अगर ये एंजाइम कैरी कर रहे हैं तो एंजाइम्स बने नहीं है यहाँ पर. ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, जो बी ऑप्शन है ये में डंबल शेप स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है विच आर गोल्जी बॉडीज एज यू ऑल नो. तो गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर है यहाँ पर. तो आप जानते हैं गोल्जी बॉडीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स, नॉट इन द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो एंजाइम शुड नॉट बी मेड इन द
Golgi bodies, they are released as a final product from the Golgi. Third आप अगर देखें तो C है, C में आप देखें कि आपको क्या दिखा रहे हैं, इट इज़ अ स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेनस है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्पॉट्स डले हुए, विच मीन्स मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू बी द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इफ इट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट शुड बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कंटेन राइबोसोम्स वेयर एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, वेयर ऑप्शन डी इज न्यूक्लियस जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का ऑर्डर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती. ठीक है, तो correct answer, yes, we are all right. If you have written the answer C, that's quite right. If you have written the answer A or B, these could be the wrong answers जो आपने लिखे होंगे by using the wrong logic, because examiner was asking about where are these enzymes made. enzymes बने कहाँ थे, यहाँ पर आपको ये नहीं बताना था कि enzyme release कहाँ से हुए थे. सही है, तो this was the correct answer was C for this question. Now let's move to the next question. Okay, this is quite an interesting question, again related to size of the cell, and this is the particular discussion again in the microscopy section. And when I'll teach you the microscopy section, we'll talk about I'll give you the very funny mnemonic to remember the correct sizes of different structures. ठीक है, different structures के जो correct sizes हैं वो मैं आपको फिर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला. Just leave this for right now because I want you to do it on your own when you learn the microscopy part. So let's move now. Okay, so here we have a question from cell membrane and transport, chapter number 4. ठीक है, the question is, the diagram shows the part of the cell surface membrane. As you can see at the first glance, this is a cell surface membrane, and 1 2 3 4 5 points are labeled in this diagram, and the question is asked, which component help to maintain the fluidity of the membrane. Fluidity of the membrane, if you remember the lecture, I have already talked specifically about the structure which take part in to maintain the fluidity. So just think for a time, I'm giving you time, now think properly, take your time, just go to the notes and approach to the right answer, and then I'll tell you the right answer when you reach to it, and we'll tell you the logic also. Okay guys, you must have reached the answer. I think you should have got to the right answer. Before revealing the answer, I should tell you the logic, what is used here. The structure we learned is responsible for the fluidity of the membrane was actually cholesterol, and the attachment of cholesterol, which was a lipid bilayer, or which was actually the fatty acid chains. ठीक है ना, जो मिडिल पोर्शन होता है लिपिड बाइलेयर का, एज यू कैन सी देयर आर 2 लेयर्स, तो जो मिडिल पोर्शन होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस मिडिल पोर्शन में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता था, और हमारे पास जो है वो लिपिड बाइलेयर में जो फैटी एसिड चेंज होती थी वो होती थी. एज यू कैन सी नाउ हियर, point 1 is representing a protein, 4 is also representing a protein, so 1 and 4 could not be the answer.
3 is representing the fatty chains, ठीक है. तो but answers as you can see the answers are given in combinations, तो आपको दूसरा भी चूज करना होगा. 3 should be there. और उसके बाद अगर आप देखें 5 को, तो 5 वाला जो स्ट्रक्चर है वो अलग से दिखाया हुआ है जो कि अटैच है इस फैटी एसिड चेन से. एंड आई हैव टोल्ड यू द स्ट्रक्चर व्हिच इज अटैच्ड हियर ऑन द फैटी एसिड चेन इज द लिपिड इज द cholesterol molecule which plays an important role in the to maintain the fluidity of the membrane. So the correct combination should be 3 and 5. Do we have that kind of answer? Let's see. 1 and 3, no, not possible, because 3 is responsible but 1 is not. 1 and 4, no. 4 is again not responsible. 1 and is not responsible. 2 and 4, no. 2 and 4 both are not responsible, but finally we have D, option D, that is 3 and 5. And you can see that 3 is the fatty acid chain and 5 is the cholesterol molecule. Both are responsible. The correct answer should be D here. And if you have approached the right answer, congratulations. ठीक है जी. So let's move to the next question now. Okay, this is again one of the most frequently asked question. Okay, there are different kinds of concepts which are asked in this form, which you are seeing right now on my screen. ठीक है ना. तो ये वाला जो part है, this is going to be interesting because you should have the right concept. I should read the question, then we'll give you time to think, and then we'll discuss the answer. ठीक है. A piece of mammalian tissue was homogenized. Homogenized किसे कहते हैं? अगेन माइक्रोस्कोपी में है कि जब आप एक फ्रैक्शनेशन करते हैं, नहीं सेल के कंपोनेंट्स को बाय सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट करते हैं, वी कॉल दैट प्रोसेस होमोगेनाइजेशन. ठीक है. और सेल फ्रैक्शनेशन जिसमें सेल के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं. तो a piece of mammalian tissue was homogenized and subjected to different centrifugation to yield 4 cellular subcellular fractions. तो आपने यहाँ पर सेल में से 4 subcellular fractions को अलग किया है. The activity within each fraction of 4 different types of enzymes A, B, C, D was investigated. Which bar chart shows the result of investigating hydrolytic enzyme activity? We are actually observing or want to observe the hydrolytic enzyme activity. This is quite easy, I think, क्योंकि इस तरह के और फिर मुश्किल आते हैं, बट ये वाला काफ़ी आसान है कि हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ हमें नज़र आएगी. तो इफ़ यू हैव रिकॉल्ड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द चैप्टर, तो आपको याद आना चाहिए. तो जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट, गो थ्रू दिस टॉपिक, एंड इफ़ यू आर जस्ट रिमाइंडिंग इट ब्लरी तौर पे आ रहा है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द आंसर. Okay guys, I think you have reached to the right answer. I hope you reached to the right answer. Then the logic of this question was quite simple. You don't have to follow exactly every bar chart. You have given a clear hint about the hydrolytic activity, which is primarily going on lysosomes, and you can see here the symbol L represents lysosomes. So if hydroelectric enzyme activity would be highest, that should be on L. Bar chart of L should be the highest bar chart. So let's see.
फर्स्ट वन में नहीं है, सेकेंड वन में अगेन नहीं है, थर्ड वन यस एल इज द हाईएस्ट, फोर्थ वन कुड नॉट बी पॉसिबल. तो इट मीन्स यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर आंसर शुड बी सी. लेट्स सी द आंसर नाउ. यस इट इज सी. ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज हु हैव रीच्ड टू द राइट आंसर. ठीक है बच्चों. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is again from the chapter number 4. Which molecules prevent the cell surface membrane from becoming too fluid or too rigid? Which, this is interesting because you know that fluidity is controlled by which molecule, but यहाँ जो question है वो कुछ और ही पूछ रहा है. Question में क्या पूछा जा रहा है कि which molecule prevents the cell surface membrane from becoming too fluid or too tight. ना ज़्यादा फ्लूइड ना ज़्यादा टाइट. अच्छा, यही चीज़ें मैं बताता हूँ कि असल में होता है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं आप बुक के हिसाब से, सिलेबस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं, बट एग्जामिनर टेस्ट योर स्किल्स ऑन अ डिफरेंट लेवल, एंड दैट इज व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट. दिस प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, यू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो कि आपने लेक्चर में नहीं सुनी होती, जो आपने नोट्स में नहीं पढ़ी होती, जो आपने इवन बुक रीडिंग में नहीं देखी होती. तो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग. तो जस्ट नाउ थिंक फॉर अ टाइम बीइंग कि क्या होता है, एंड देन विल टॉक अबाउट द आंसर. Okay guys, you must have reached to the right answer, I hope so. But if you haven't, if you are confused, so there is no need to confusion. You know, you must know that fluidity is controlled or maintained by cholesterol. If it is maintained by cholesterol along with fatty acid chains, so obviously no other molecule can participate it in this function. Okay, that's the specific function of the cholesterol and the fatty acid chain. As you can see here, there is no option of fatty acid chain here, so but cholesterol is there, and that is a major player of the maintaining the fluidity. So I think the correct answer should be A. Let's see the answer. Is it A? Yes, it is. Congratulations to all of those who have reached to the right answer. Okay, now let's move to the next question. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. नो नीड टू वरी अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, जस्ट नीड टू फोकस on the concepts we are discussing on mutually here. Okay, the next question we have on the screen is diagram shows a red blood cell and the concentration of ions in the plasma and in the cell. ठीक है, रेड ब्लड सेल शो किया गया है और कुछ आइंस हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर शो की गई है. Now let's see what's the question. Which ions are actively transported into and out of the cell? कौन से आइंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को याद करो, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है. एंड देन आंसर दिस एंड देन we'll discuss the right answer. So just quickly think about the right answer and then we will see what's the answer and why.
Okay guys, you must have reached to the right answer, I hope so. And if you haven't, so let's discuss the approach of this जो है ना वो answer. So which ions are actively transported into cell and out of the cell? So first option, let's evaluate every option. Chloride into the cell. Chloride is higher outside and a lower inside. तो अगर उसको अंदर जाना है तो that will be higher to lower movement which will not require any energy. एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी. तो आप एक एक पे रूल आउट करते जाओगे. पोटेशियम की बात करते हैं. पोटेशियम, यस, पोटेशियम इनटू द सेल अगर जाना है तो दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम लोअर टू हायर मूवमेंट. तो दैट कुड बी एन आंसर, बट वी हैव टू सी अबाउट सोडियम एज वेल. सोडियम इज लोअर इनसाइड एंड higher outside. Yes, that could be an answer. And if you remember, we have talked about sodium potassium pump. ठीक है, जो एक ही वक्त में दोनों को मूव कराता है. तो that could be the right answer. But before deciding the final option, just look at the other options too. So option C says sodium. No, sodium into the cell अगर जाना है, that is all going to move passively because it will be the movement from higher to lower concentration obviously. ठीक है. And again sodium, the only possible option should be here, the option number B. Let's look at this B now. Is it B? Yes, it is B. So congratulations to all of those who have answered or take B. Okay? And you have to be honest with you. Okay, let's move to the next question now, and you can see the next question here on my screen. It is from the cell membrane and the transport chapter, and it's showing that figure 2.1 is a drawing of a transverse section of leaf. You have seen this diagram in your O levels, if you remember. You have seen this diagram in your O levels: palisade mesophyll cells, epidermis, spongy mesophyll cells, blah blah blah. Okay, let's see what's the question about this. Use label lines and the letter. That's the question of paper 2. So this is the first question of paper 2 in this worksheet. Use the label lines and the letters X, S, E and D to indicate the following on 2.1. X, xylem, phloem, E and D. You should know this. I think you should know this because you can label this कि कहाँ पर होगा क्या नहीं होगा. So I can imagine I should leave it for because you should know this because you have already discussed this in O levels. ठीक है. As far as the magnification part is concerned, you have also learned this in your O levels, but if you haven't remembered this concept, so we will be discussing this concept again in microscopy section. ठीक है जी. So don't need to worry about that. So just leave this question. अच्छा, explain using the term water potential how water move from the vascular tissue to the atmosphere. This is the question of transport in plants actually. ठीक है ना. तो there's a whole concept of transpiration, pull and root pressure that should be written here. So we haven't discussed that because we haven't learned transport in plants. So leave this question for now. ठीक है. So I think that we should stop this session right here because otherwise it will be saturated. Inshallah ta'ala, we'll have 2 or 3 sessions of this kind where we'll be discussing a lot of P1 and P2 questions randomly, and I'm really looking forward कि आपको बहुत सारे concepts उससे clear होंगे. तो आज के session के लिए इतना ही. ठीक है. Inshallah I'll see you guys in the next session again with the worksheet, and we'll see more variety of the questions from this topic. ठीक है जी. टेक केयर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.